नमस्ते जी। नमस्ते जी सबको। सबको नमस्ते। Raj Balaji asked me to start the Sandhya. So please mute everyone. Sitting tall, close your eyes and recite Om 3 times. Om Bhurabhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanno Devir Abhishtaya Apo Bhavantu Pitaye Shanyor Abhis Sarvantu Nah. Om Vak Vak, Om Prana Prana, Om Chakshu Chakshu, Om Shrotram Shrotram, Om Nabhi, Om Hirdayam, Om Kantha, Om Sheraha, Om Baubhyam Yashobalam, Om Kartal Karapisthe, Om Bhu Punatu Shirishi, Om Bhuvaha Punatu Netrayo, Om Swaha Punatu Kanthe, Om Maha Punatu Hirdaye, Om Janaha Punatu Nabhyam, Om Tapaha Punatu Padayo, Om Satyam Punatu Punashirishi, Om Kham Brahma Punatu Sarvatra, Om Bhu, Om Bhwa, Om Swaha, Om Maha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam, Om Ritancha Satancha Bida Tapaso Adya Jayata Tato Ratre Jayata Tata Samudro Arnevaha Om Samudra Darnevaha Dadi Samvatsaro Ajayata Aho Ratnani Vidadad Vishwasya Mishato Vashi. Om Surya Chandramaso Dhatayatha Purvamakalpayat Divancha Prithavim Chantariksha Matho Swaha. Om Shano Devir Abhishtaya Apo Bhavan Tupitaye Shanyor Abhis Sarvantuna. Om Prachi Dig Agnir Adhipati Rasito Rakshita Aditya Ishavah Tebhyo Namo Dipatibhyo Namo Rakshatrebhyo Namah
ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मृतं वोजं वेदद्मः ओम दक्षिणा दिगिंद्रो दीपति त्रिशिराजि रक्षिता पीतर ईशवः तेभ्यो नमो दीपतिभ्यो नमो रक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मृतं वोजं वेदद्मः ओम प्रतीचि दिग्वरुणो दीपतिः प्रदाकु रक्षिता आनम ईशवः तेभ्यो नमो दीपतिभ्यो नमो रक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मृतं वोजं वेदद्मः ओम उदीचि दिक्सोमो दीपतिः सब्जो रक्षिता शनिरीशवः तेभ्यो नमो दीपतिभ्यो नमो रक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मृतं वोजं वेदद्मः ओम ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्मा शग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशवः तेभ्यो नमो दीपतिभ्यो नमो रक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मृतं वोजं वेदद्मः ओम ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः शिवत्रो रक्षिता वर्षम ईशवः तेभ्यो नमो दीपतिभ्यो नमो रक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मृतं वोजं वेदद्मः ओम उद्वयं तामसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगनं ज्योतिरुत्तमम् ओम उद्यतं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ओम चित्रं देवा नामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तु स्वाहा ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चक्रमुच्चरत् पशेम शरदाशतं जीवेम शरदाशतं शृणुयाम शरदाशतं प्रब्रवाम शरदाशतम् अदीनः स्याम शरदाशतं भूयश्च शरदाशतात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां
Sadhya Siddhir Bhavenaha. Om Namah Shambhavaya Cha Mayo Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivataraya Cha. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukumiva Bandhanan Mrityormokshya Mamritat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukumiva Bandhanan Mrityormokshya Mamritat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukkamiva Bandhanan Mrityormokshya Mamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your hands and generate energy. Cup your face and transfer the energy to the five sense organs. ईश्वर का धन्यवाद करते हुए slowly open your eyes. Namaste सबको. Thank you, Dr. Gandhi. Namaste, everyone. We are in the Sandhya session. Today is October 16, 2023. So I'm going to speak something today. I'm going to share the screen. So my topic today is Suparna. I hope everybody can see my screen before I keep proceeding. Yes, we can see. Okay, thank you. So I have taken this mantra. It's found in Rig Veda 10.1.1.1.4, Mandal 10, Sukt 111, mantra number 4. It is also found in Nirukt 10.46, chapter 10. It's in chapter 10 because if you buy Nirukt of a different Bhashakar, it may not be 46, it may be less or more. And it contains the word Suparna right there. So it says, Ekaha Suparna sa samudrama vivesha sa idam vishvam bhuvanam vichaste tam pakena mansa pashyam antitsatam mata relihi sa u relihi mataram. The rishi of this mantra is Sardhir Vairupo Dharmo va Tapasaha. Devta is Vishwe Devaha Shandis Jagti. So we do pad part on this one. We break it into separate components, each word. Then this is what it looks like. Ekha Suparna Sa Samudram Avivesha Sa Idam Vishwam Bhuvanam Vichaste Tam Pakena Mansa Apashyam Antida Tam Mata Reli Sa Iti Reli Matram. I think there's some kind of a misprint here. I'll fix that one later on. So we break this into components, into sentences. I think like 4 or 5 sentences I have broken this into. The first sentence is Ekha Suparna Sa Samudram Avivesha. And its meaning is clear. Ek Suparna hai,
वह अंतरिक्ष में प्रविष्ट है. So I am going to follow the explanation given by Maharshi Yas in Rukt, because it is in chapter 10, Mandal 10, so its explanation has not been given Maharshi Dayananda Saraswati ji. So I'm going to follow him, and then after that, after my talk is over, you can reconcile. I think it will match the other ones that is found in Rig Ved Bhashyas of other authors. So I'm just letting you know in the beginning, because it's in the beginning may not agree with what you might be if you want to look over this. What is the explanation of this mantra is in the Rig Ved Bhashya Bhumika, in the Rig Ved Bhashyas by other authors. So first we try to understand what is Suparna. So I am going to describe this from the Vyakaran point of view so that you can get a deeper meaning of this word. There will be two different explanations from the Vyakaran point of view. Suparna is Su plus Parna. It is formed from Dhatu Pri, which means Palan Puranayoho, which means Palan Karna, Puran Karna. Very simple. And then there is a sutra in Unadi Kosh 3.6 is a Pri Dhatu se pare na pratyaya hota hai. I'm not going to go detail of this because most of you don't know the Vyakaran part, but just very quickly I will go over there. So Sarv Dhatu, Adhatu Kyo se Gun, Uran Rapra will form this one over here, becomes Parn. Then another sutra comes in and it becomes Parna. So then you add the Upsarg Su with it. And that's very simple. It's a simple process. You know, people who have been in the Vyakaran class with me, they know that this is very simple. So, so that will mean Suparna means जो अच्छी भली भांति अच्छी प्रकार से हमारा पालन और पूर्ण कर रहा है. The second meaning is given by Maharshi Yask, and he has derived it differently. He is not using the dhatu pri, he is using the dhatu pat gatau, gati arth mein. But he is also using the same na pratyay. He puts sa, su plus pat plus na, then he converts that from su to par plus na, suparna. So and gives the meaning sundar patan karne wala, sundar gati, jiski sundar gati hai. So Suparna means Su plus Parna, Sukh Gati, Su means Sukh, Parn means Gati. ऐसा कोई भी पदार्थ जिसकी गति से अर्थात प्राप्ति से सुख पहुंचता है उसको महर्षि यास सुपर्णा कहते हैं. That is what is Suparna. So then he goes on to say, and he gives 2-3 different meanings over there. Suparna. He says Suparna means Kirane, जिनका इनका पढ़ना सुखप्रद होता है. सर्दियों में धूप बहुत अच्छी लगती है. दूसरा है इंद्रियां ज्ञान प्राप्त कराने के कारण इनकी गति बहुत सुखदायक होती है, बहुत सुखकारी होती है. तो इस मंत्र में महर्षि व्यास ने जो अर्थ किया है वो है प्राणवायु. इज कॉलिंग सुपर्णा एज प्राणवायु. इसका जो चलना है संचरण जीवन प्रद है. जब प्राणवायु चलता रहता है शरीर में तो सुखदायक रहता है. ये नहीं तो ना चले तो क्या क्या बोलते हैं हम हिंदी में, प्राण पखेरु हो गए, पंख लग गए, उड़ गए. वो बहुत प्रसिद्ध ये है कहावत, प्राण पखेरु का उड़ना. So Maharishi Vyas is describing this mantra from Pranavayu. And I have looked into 2 or 3 books or some from the internet to make sure that I'm using the correct wording over there. So what does that mean now? We broke this into about 4 sentences. One was Ekaha Suparna Sa Samudram Avivesha.
So the meaning Maharishi Yask has given is ek hi, means advitiya, no duality, only one. He says सुपर्ण नामक प्राण है, वह कैसा है? वह सुंदर उड़ने वाला वायु समुद्र हृदय रूपी अंतरिक्ष में, और यू कैन आल्सो कॉल अंतरिक्ष में प्रविष्ट है. आविवेशा, विश मीन्स टू एंटर, वो प्रविष्ट है, सदा ही उसमें प्रवेश किया रहता है. So in English this says there is one and only one prana named Suparna. There is no one like this prana that is always spread in the caves of one's heart. It is also present in the sky. So you can use it that way also. समुद्रम का अर्थ उन्होंने किया महर्षि ने हृदय रूपी अंतरिक्ष. समुद्र का अर्थ वैसे होता है अंतरिक्ष, और का हृदय रूपी अंतरिक्ष. Our second sentence is Sa idam vishvam bhuvanam vichaste. Sa means वह, idam means in, vishvam सारे, भुवनम, भुवनम का अर्थ किया भूतानी, सब भूतों को, सब प्राणियों को, एक्चुअली एनीथिंग दैट एग्जिस्ट. विचष्टे, विचष्टे उनका अर्थ किया विपश्यति, मीन्स वो विशेष रूप से देखता है, भली भांति इन सबको देखता है, इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है, सब प्राणियों पर. ये प्राण ऐसी चीज है जो सब प्राणियों पे अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखता है. इसके चलने से ही जीवन चलता रहता है. Our third sentence is Tam pakena mansa antita apashyam. So this is a statement that is being made by a rishi, from the rishi. And it says tam. Tam is usko, usko मैंने पाकेन मनसा, परिपक्व मन से, मनसा वाले रो, मन के द्वारा, मनसा परिक्रमा, this comes there also. So परिपक्व मन से अर्थात शुद्ध अंतःकरण से, अंतिता, अंतिता मीन्स निकट से, अपश्यम, अपश्यम मैंने देखा है, साक्षात की अर्थात साक्षात्कार किया है. अंति मीन्स निकट से, that's what I want to say. इससे aware. Our fourth and I think last sentence is माता रेलही स मात्रम रेलही. उस सुपर्ण नामक प्राण को कभी माता, माता यहाँ पर लिखा वाणी अर्थ किया महर्षि व्यास ने, जैसे वेद माता होती है वेद वाणी, तो उसका वाणी अर्थ किया. कहते उसको कभी वाणी ग्रहण करती है उस सुपर्ण नामक प्राण को, और कभी वह वाणी को ग्रहण करता है. दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. Because we know that वायु जो है, वाणी जो है वायु को ग्रहण करती है. Sound is produced with the help of air. Air from the navel region rises above and strikes various parts of the mouth, thus producing distinct words. और वायु वाणी को ग्रहण करता है. Because the sound that is produced travels only with the help of air. If there is no air, the sound will not travel any further, much further after it is produced. So they are complementing each other. So we'll try to see now what can be the other meaning of this Suparna. So we go to, I found this, I studied this Vedanta Darshan, and in the Vedanta Darshan, Sukta 1.3.39 जो वचन दिया है वो है प्राण कंपनात्, प्राण कंपाने से. That's its literal meaning is प्राण कंपाने से. So, and when you read the explanation of this sutra, and it comes out अध्यात्म प्रकरण में आया प्राण शब्द, परमात्मा के लिए जानना चाहिए, क्योंकि जैसे शरीर में उपस्थित प्राण सारे शरीर को कंपाता है,
प्राणः कंपनात्, जैसे ये सारे शरीर को चलाता है, उसी प्रकार परमात्मा सारे जगत को कंपाता है, अर्थात चलाता है, अर्थात सारे जगत को वो गति देता है। तो इसके लिए उदाहरण दिया गया है। द एग्जाम्पल दैट हैज बीन गिवन फॉर दिस वन इज फ्रॉम कठोर उपनिषद, I think it is 6.2. And there is a mantra in Katha Upanishad. He said, Yadidam kimcha jagat sarvam prana ejati nisritam mahad bhayam vajra mudyatam ya etad vitur mritaste bhavanti. So the meaning here is इदम, यह जो कुछ भी निकला हुआ उत्पन्न हुआ जगत कांपता है, गति करता है, यह प्राण के कारण है। श्रितम, श्री प्लस क्त प्लस अम, वह प्राण महद, महद मीन्स महान, भयम भय के समान, वज्र के समान, वज्रम उद्यतम ऊपर खड़ा है। तो इस प्रकार जो इस वज्र रूप ब्रह्म को जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर प्राण शब्द आया है, इट रेफर्स टू ऑलमाइटी गॉड, उसको पाकर ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, नॉट द ऑर्डिनरी एयर। सो और यहाँ पर जो वज्रम का अर्थ दिया हुआ है, ब्रह्म दुष्ट पुरुषों के लिए हाथ में उठाए वज्र के समान महान भय को देने वाला है। So all this universe that there is emerges and vibrates because of prana, which is like an uplifted thunderbolt, like the vajra we call it. शरीर के कंपन के कारण शरीर में स्थित प्राण हो सकता है, परंतु वह जगत के कंपन का कारण नहीं हो सकता है। उसी को जानकर मनुष्य मोक्ष को पा जाता है। यह बात भी ब्रह्म में ही घटती है, वायु में नहीं घटती। So this is another way of defining Suparna. So Suparna here means Brahm, that saying that. So now we can go back to our previous mantras. So now this is now we may call this the Adhyatmic explanation of the same mantra. Earlier we defined it, the Ajidevic way that Maharishi Yas has done. And this is the same mantra that we picked up earlier. We can define it with respect to the Suparna means Paramatma over here, Brahm. So then we can say Ek hi Advitiya means one and only Suparnamak Paramatma hai. वह हृदय रूपी अंतरिक्ष में प्रविष्ट है, सदा ही उसमें प्रवेश किए रहता है। So this is the explanation you will find. If you look into books in if you look at the explanation given in the Rig Ved, you will find this explanation there. But I wanted to present to you two different explanations. One is from the Maharishi Yas has given in Naruk, and the other one is given in the Bhashya of Rig Ved. And here the Suparn means प्री धातु पालन पूर्णयो, जो पालन करता है, जो पूर्ण करता है। परमात्मा ही हमारा पालन कर रहा है, परमात्मा ही हमें पूर्ण कर रहा है। पालन करना मीन्स ये जितने भी सृष्टि चल रही है, he has provided us with sun, the rays of the sun, and which is heating this atmosphere of the earth and also causing rain. So अगर sun नहीं होगा तो this whole earth will behave like Alaska and the life will not exist here.
सो एंड आल्सो परमात्मा पूर्ण करने वाला है। परमात्मा हमारी कमियों, हमें प्रेरणा देता है, हमारी कमियों को पूर्ण करता है। और उसका अलावा परमात्मा ही हमें, जब हम विद्यार्थी होते हैं तो हम पढ़ते हैं, और मैं तो अभी तक भी विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग ऑल दिस साइंस, द साइंस ऑफ द व्याकरण। तो परमात्मा जो है वो हमारी हमें ज्ञान के माध्यम से पूर्ण करता है, ज्ञान बुद्धि इंटेलेक्ट के माध्यम से। वह द सेकंड सेंटेंस वी हैव मेड, वह इन सारे भूतों को विशेष देखता है, भली प्रकार से देखता है। He observes everyone that has been produced on this earth, even the whether it is a living object or non-living object. उसको मैंने, अब ऋषि का स्टेटमेंट आ जाएगा, उसको मैंने परिपक्व मन से अर्थात शुद्ध अंतःकरण से अंततः निकट से देखा है, अर्थात साक्षात्कार किया है। उस परमात्मा को कभी वाणी ग्रहण करती है और कभी वह वाणी को ग्रहण करता है। So they complement each other because the sound is produced by the mechanism that he has created and by the thoughts that originate in our mind, the mind that has been created by Almighty God. And also, but the sound also goes further only because of the air. So, and also by that sound, also we are praising our God. We are उसकी हम स्तुति कर रहे हैं, हम उसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, परमात्मा के मंत्रों का जो व्याख्यान कर रहा है, वो उसी वाणी के माध्यम से, जो शुरू में ज्ञान दिया गया था वेद का, वो इसी प्रकार से दिया गया था, वाणी के माध्यम से दिया गया था, by the four rishis. And the other explanation, I think my screen has frozen. It's coming now. Yeah. It's coming from the next mantra of the Kathopanishad. I shouldn't be calling it mantras because mantra is reserved for Ved. By the Vachan, you may see from Kathopanishad. तो इसमें I didn't write the complete over here. We wrote प्राण नामक परमात्मा के गुण बताए जा रहे हैं। कहते उसी के भय से, अर्थात अटल नियम से अग्नि तपती है, उसी के भय से सूर्य तपता है, विद्युत और वायु अपना काम करते हैं, और उसी के भय से अर्थात अटल नियम से मृत्यु आता जाता रहता है। तो उन्होंने उसको डिफाइन किया है उन्होंने कि व्हाट इज प्राण इन दिस केस। प्राण मीन्स परमात्मा ओवर हियर। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। देयर इज अनदर मंत्र ओवर हियर. That is the very famous mantra Arya Samaj knows. Arya Samaj, when they want to give explanation of the Traitva, they usually refer this one over here, Dvasparna, Suparna, Sayuja, Sakhaya. So this kind of explanation, I don't know if it has been done or not done. Perhaps it has already been done. So we can discuss that next time. And I will stop right here. And I'll be glad to answer any questions you might have. And please unmute yourself if you have any questions. राजी, समुद्र isn't sea और ये अंतरिक्ष करते हैं, जैसे कहते हैं ना समुद्र। वो इसी उन्होंने डिफाइन ऐसा किया ना, देखो समुद्र और अर्णव दो वर्ड आते हैं। When you recite the संध्या मंत्र, वहां भी समुद्र और अर्णव आते हैं। तो समुद्र का मतलब अंतरिक्ष किया हुआ है लोगों ने, और अर्णव का मतलब जो हमारा ओशियन है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया हुआ है। अच्छा। Or you can also say the other way also, Samudram ka matlab Avkash, because he lives in the space also. It's not that he's only present in the firmament on top of the earth. He's present in the empty space also. And then you can say, okay, there's a empty space in the Hridaya Pradesh, they are talking, there's an empty space there as well, where both the soul lives and the Paramatma lives, both live over there. So in that sense, you can say Hridaya Rupi Antariksh mein he exists. Thank you. उनको थोड़ा डिफरेंशिएट किया हुआ है समुद्रम को और अर्णवा को ऑथर ने। Any other? No? Okay. I hope everybody understood it, or maybe nobody understood it. Explanations are good.
So I try to make it simple so people can understand it, and also You made it very simple. Just आपने जिस तरह कहा ना समुद्र और नवा का जो संध्या में भी आता है, वो आम लोगों ने यही मीनिंग किया, जो वर्षों से वही मीनिंग किया, जो आकाश में जो वाटर वेपर है, क्योंकि I think even as far I understand, when the earth was made, a lot of the water was actually not on the ground. It was really all hot, and all of a sudden the water came about 500 million years after the origin of earth. Earth, according to the modern science, is 4.5 billion years old, and the first 500 million years there was no water. So water came from whichever you can say asteroids and wherever it came, but it was all in water vapor form, and that's called Samudra Arnava, you can say too. That's been translated Akash ka Samudra. हाँ, मैंने सुना ये आकाश का समुद्र बोलते हैं. आकाश का समुद्र ही कहते हैं उसको ट्रांसलेशन में, जिस तरह भल्ला जी ने कहा. Yeah. इतनी मेरी समझ है, that's the way. And to some extent, years of course don't reconcile with modern science, and our 1.9 billion years, those don't reconcile at all. Yeah. No. This is good. This is what it is. Yeah. So actually, the Earth was made in steps. I watched the program one time in the National Geographic. It was coming, and they were saying it. The layer by layer. इसके ऊपर layer पड़ी copper की, इसके ऊपर layer पड़ी बाकी elements की, इसके ऊपर layer पड़ी iron की. And he was saying that the most element found on Earth is iron itself. And in Africa, in some country in the Africa, they say the iron has come to the top of the crust of the earth, and it rusts over there. And the ladies over there use that rust for a makeup. So, but the point was that it was made in steps. It was not made homogeneously, because you see it in real over here on the earth. You will find zinc at specific places. Not every place has zinc. Similarly, you find iron, you find other ores, you find the copper, aluminum, all those. They are concentrated in some isolated places over there. So that's how they say the earth was formed. That is what they are hypothesizing. So any other? No. So we'll do Shanti part, and our next pravachan tomorrow will be by Dr. Sudhir Nanji. So, Om Dev Shantirantariksam Shantihi Prithvi Shantirapah Shantiroshadayah Shantihi Vanaspatayah Shantir Vishve Devah Shantir Brahma Shantihi Sarvam Shantihi Shantireva Shantihi Sama Shantiredhi ओम शांति शांति शांति. सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का. We do not have any other programs today to follow this one, so I will see you tomorrow at 6 p.m. Eastern time. Thank you very much for joining. आज शाम को तो होगा ना 5 बजे? Don't mind. आज शाम को तो कौन सा वो रामायण का होता है थ्रू एटलांटा के थ्रू. हाँ, वो अटलांटा से होता है. दैट इज थ्रू. यस, यू आर राइट. वो अटलांटा से होता है. वो 8 बजे 5 बजे होगा. उनका होना चाहिए. आई डोंट नो, आई हैवंट चेक देम. समटाइम दे कैंसिल इट, समटाइम सो यू जस्ट प्लीज चेक इट बिफोर यू जॉइन. ओके. वैसे तो आई कैन सी इट राइट आउट वेरी क्विकली इफ इट इज देयर कमिंग देयर और नॉट. So yeah, it says it is on today, so it will be coming. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका. सबका बहुत बहुत धन्यवाद. सबको नमस्ते.